नमस्कार दोस्तों, आर के डिजिटल स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड द डेटा फ्रॉम याहू फाइनेंस। और अल्गो ट्रेडिंग के रिलेटेड जो है, जो भी मैं लेक्चर लेता हूँ वो सारे लेक्चर यहाँ पे उसका डेटा अवेलेबल है। तो आप यहाँ से मतलब रेफर करके आप वीडियो देख करके दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है। तो याहू फाइनेंस क्या करता है? याहू फाइनेंस जो एक सेट ऑफ एपीआई प्रोवाइड करता है टू फेच द हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम द डेटाबेसेस। ओके। तो उस हिस्टोरिकल डेटाबेस के ऊपर जो है ना आप मैनिपुलेट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक जो है ना अपवर्ड जाएगा, कौन सा स्टॉक डाउनवर्ड जाएगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं हाउ टू डाउनलोड द डेटा फ्रॉम द याहू फाइनेंस। ओके। So I'm starting the import. This is the important library import pandas panda as pd and import Yahoo Finance as yf. Okay, and then start underscore date is equal to I will just define a 1.2015.0101. Okay, and then the underscore date is equal to just take 2025 current month 07, and then today is the 2nd July. Okay, and then we have to define the symbol. So I'm just taking Reliance does NSE. Okay, and then we have to call Yahoo Finance yf dot download. Okay, and then download method has three parameters. One is symbol, right, and other is the start date, from where to where you want to fetch the data, and end date. Okay, let's store the data in data frame yf dot download, and then symbol start date and slash end date. Okay, and then so ये क्या करेगा? ये स्टार्ट डेट और एंड डेट से रिलायंस का हिस्टोरिकल डेटा ना डाउनलोड करके ये डाटा फ्रेम में डाल देगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड नाउ। ओके, सी 100% कंप्लीटेड हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखें हाउ टू प्रोसेस द आफ्टर फेचिंग द डेटा फ्रॉम याहू फाइनेंस एंड हाउ टू अप्लाई द एसएमएस स्ट्रेटजी, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, all these things. Okay, one by one. So thanks for watching this video. We will see you in the next lecture. Bye bye.